Hello students, this is Mummy Narayan. We continue with the project scheduling and resource learning chapter. Okay. Other schedules derived from the project schedule. Okay, तो आगे हमने दो टाइप के शेड्यूल पढ़े. सी लेबर शेड्यूल. The schedule for the labor will indicate the nature and quantity of the labor required for the execution of the different operations on different dates. The advantages of preparing it is to reduce the labor cost. This schedule is derived from the construction schedule. That means construction schedule में कौन कौन सी एक्टिविटी के लिए स्किल लेबर चाहिए, अनस्किल लेबर चाहिए. ओके, उस पर लेबर कॉस्ट डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल आपको लेबर चाहिए, आपने शेड्यूल के हिसाब से लेबर फिक्स नहीं किया तब तो क्या होगा, लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगा. ओके, इसका मतलब क्या है कि भाई जब भी आप एडवांस में कुछ भी चीज़ फिक्स नहीं करते हो, ओके, लेबर शेड्यूल जो भी है वो एडवांस में आपने फिक्स नहीं किया है, बट आपको ज़रूरी हो, जब आपको ज़रूरी, फॉर एग्जांपल मेशन है तो उसका स्किल लेबर एक परफेक्ट होना चाहिए हमारे पास कि भाई स्किल लेबर है तो उसका रेट इतना है और इस टाइम में उसको एडवांस में बोलना पड़ता है. ओके, कि आपको ये काम करना है. फॉर एग्जांपल आप एंड टाइम पे बोलते हो, जब भी वर्क करना हो तभी बोलते हो तो उसका रेट ज़्यादा हो जाता है. ओके, वो ज़्यादा रेट बोलता है, कहने का मतलब ये है. तो लेबर शेड्यूल कंस्ट्रक्शन शेड्यूल के हिसाब से पहले से फिक्स होना चाहिए. एक्सकेवेशन तो टाइम इन वीक्स, 2 वीक्स के लिए कितने लेबर चाहिए, दैट इज़ 15 और 10 लेबर चाहिए. वीक 1 में 15, वीक 2 में 10, उसी तरह से अलग अलग आइटम के लिए बताया है. देन क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर, तो वीक 1 to 7 वीक के लिए 2 सुपरवाइजर चाहिए. देन 8 to 14 वीक्स के लिए अगेन 2 सुपरवाइजर चाहिए. तो दिस वन इज कॉल्ड द लेबर शेड्यूल चार्ट. फॉर एग्जाम्पल मेशन है तो 1 to 7 वीक में 6 मेशन चाहिए. 8 to 14 वीक है तो उसमें मेशन 8 चाहिए. ओके, उस तरह से आपका जो भी शेड्यूल है, लेबर शेड्यूल, वो आपको फिक्स करना पड़ता है. Equipment schedule. This schedule is prepared before the project is started to establish the types, quantities and dates on which the equipment needed, so that the same way may be as and when required. That means आपके पास आपको इंस्ट्रूमेंट जिस एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है उस टाइम पे वो इक्विपमेंट होना चाहिए. नहीं तो क्या होगा कि आपको वो इक्विपमेंट मिलेगा नहीं, आपका काम रुका रहेगा. उसके लिए आपका जो भी कॉस्ट है प्रोजेक्ट का वो बढ़ जाएगा. कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बढ़ेगा. सो दैट द सेम वे मे बी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. दिस इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ द कंस्ट्रक्शन शेड्यूल. द कंस्ट्रक्शन engineer should take maximum use of construction equipment when reached and take out of the project at the earliest to avoid the financial losses. कॉस्ट ना बढ़े, फाइनेंशियल जस्टिस से हमें कॉस्ट का जो भी लॉस होता है वो ना हो, फाइनेंशियल लॉस ना हो, उसके लिए आपको जिस टाइम पे जिस इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है उस टाइम पर वो इक्विपमेंट अवेलेबल होना चाहिए. The table 5.4 will show a chart concerning the equipment schedule. Invoice schedule. इक्विपमेंट शेड्यूल, तो यहाँ पे चार्ट दिया गया है. क्लासिफिकेशन ऑफ द लेबर, तो बुलडोज़र, रोड रोलर, कंक्रीट मिक्सचर, टोटल क्वांटिटी कितनी चाहिए, 4, 1, 2.
नेम ऑफ द मंथ जनवरी, वीक्स 1 2 3 4, उसमें इतने नंबर से बोल्ड हो जाना चाहिए। ओके, तो एक शेड्यूल प्रिपेयर किया है, उसके हिसाब से आपको चलना है। देन इनवॉइस शेड्यूल, construction management invoice is the amount of money released by the executing a particular activity or work. Thus, the invoice value is the product of the quantities of work done each month for a particular activity and the corresponding rates quoted by the contractor. It must be kept in mind that the invoice schedule is the estimated billing amount और ऑन ए मंथली और वीकली बेसिस। दैट मीन्स जो भी हमने काम किया है मंथ वाइज, ओके, वो कॉन्ट्रैक्टर भी फिक्स करता है। ओके, उस मंथली या वीकली बेसिस जो भी है वो कॉन्ट्रैक्टर फिक्स करता है कि ये जो भी हमने काम किया है उसका रेट इतना है। The actual invoice may be exactly as per the planned one and it may be ahead or behind the estimated figure. This schedule also acts as a basis for the monitoring the progressing of the invoicing. The steps involved in preparing the invoice schedule are: from the quantities of the item taken from the bill of the quantities in month-wise or a week-wise quantities to be executed every month is prepared corresponding to the project schedule. For example, for earthwork, the monthly breakup is 5%, 15%, 20%, 25%, 25% and 10% corresponding to month 1, 2, 3, 4, 5, 6 respectively. Based on the quantities and unit rates, calculate invoicing the amount for all the activities for each month. For large projects, only major items are taken into account for invoicing. लार्ज प्रोजेक्ट होता है तो मेजर आइटम ही आपको लेनी है, दिखानी है इनवॉइस के लिए। बिलिंग क्वांटिटीज में, फॉर प्रोजेक्ट हैविंग सब प्रोजेक्ट्स, invoice schedule for the sub-projects are prepared and then a consolidated invoice schedule is prepared. One of the major problem in preparing the invoice schedule is insufficient information detail available in the drawings and bill of the quantity. आपके पास इंफॉर्मेशन इतनी होती नहीं है ड्राइंग में और बिल ऑफ द क्वांटिटीज एट द टाइम ऑफ शेड्यूलिंग। जब भी आप शेड्यूलिंग करते हो प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, तभी आपके पास क्वांटिटीज ड्राइंग कुछ होता नहीं है। इसका एक ड्रॉबैक है। फॉर एग्जांपल, द आइटम वाइज स्प्लिट अप ऑफ द क्वांटिटीज दैट इज इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट, शटरिंग, स्टील एक्सेट्रा इन कॉलम, स्लैब, फुटिंग may not be available. In such cases, that means कई आइटम होती है, फॉर एग्जांपल फॉर्म वर्क के लिए जो भी हमने आइटम प्रोवाइड किया है, ओके, वो ये शेड्यूलिंग में अंदर ऐड नहीं होता है। उसकी वजह से आपका जो भी बिलिंग बनाते हो आप, ओके, उसमें इनवॉइस शेड्यूल बनाते हो और इनवॉइस बनाते हो, उसमें तकलीफ होता है। ओके, बिकॉज आपने जब भी शेड्यूल प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग किया है तभी इसका आपने काउंटिंग किया ही नहीं, इसलिए इन सच केसेस रीजनेबल एग्जम्पशन एंड पास्ट एक्सपीरियंस आर यूटिलाइज्ड टू अराइव एट द क्वांटिटी। द टोटल इनवॉइसिंग फिगर विल ऑल्सो इंक्लूड द escalators, price rise, escalations, price rise as per the accepted term in the contract. A destination should be made between the invoice figure and the actual payment done. The entire bill amount is not payable to the contractor. Only certain percentage of the total work done are paid to the contractor and the rest of the money is kept either as retention money or as a certain deduction in lieu of the advances drawn earlier by the contractor. Then staff schedule. Depending upon the invoicing to be done for a month-wise schedule for the project staff is prepared. In this schedule, the date by which a particular staff is required is also mentioned, and the release date of the particular category of the staff that is surplus at the project site is to be mentioned as well. The number of the required depends on nature of activity, quantum of work,
working hours adopted by the organization, the preparation of the work which the main contractor is planning to subcontract, etc. Staff category, project manager, numbers required 1 from M1 to M10. ये क्या है, एक्टिविटी का नाम है कि ये एक्टिविटी में ये चाहिए. ओके, देन रेसिडेंट इंजीनियर 1 फ्रॉम 1 to M1 to M10. सिविल इंजीनियर 1, जूनियर इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, सिविल. Milestone event schedule. Milestone event are very important in the proposed schedule of the project. The top management is more concerned with the schedule completion of the milestone event. Some example of the milestone event are completion of the foundation, completion of the superstructure, completion of the sanitary and plumbing work. From the project schedule, the details of the milestone events are separated and reported in the milestone event schedule. तो ये सब जो भी एक्टिविटी है दैट इज कॉल्ड द माइलस्टोन इवेंट. द स्लीपेज इफ एनी एंड इज फाइनेंशियल implications are closely monitored and the corrective action to be taken to bring the sleep milestone event back to track also are also proposed. Milestone event schedule: the completion of the foundation, completion of the superstructure, completion of the sanitary and plumbing work. तो estimated date of completion यहाँ पे लिखना होता है. Project slippage in the week. Description of the impact of the problem as action to be taken, person responsible, last date is estimated date of the completion, and project slippage in weeks. Specialized agency schedule. The construction management in a project, a contractor may not be in a position to carry out all the activities in an economical manner. For some of the activities in a project, he may not have requisite expertise. In such cases, the contractor enters into the contractual agreement with some specialized agencies called the subcontractor. तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, वो सभी काम में माहिर नहीं होता है, सभी जो भी एक्टिविटीज़ है वो नहीं करता है, तो उसके लिए वो सब कॉन्ट्रैक्टर का कांटेक्ट करता है. ओके, और उसके पास सभी काम करवाता है. A list of the activities for which the subcontractor are required is prepared. The schedule date of the start and completion of the such activities are noted. Normally, following specialized agencies are engaged as subcontractor by the main contractor. Waterproofing work है, aluminium work है, sanitary और plumbing work है, then electrical work है, road work है. ओके, तो ये सब शेड्यूल इसमें बनाया हुआ होता है. क्या कितना यूनिट चाहिए, क्वांटिटी कितना चाहिए, डेट ऑफ स्टार्ट, डेट ऑफ कंप्लीशन, एल्यूमिनियम वर्क है, सैनिटरी प्लम्बिंग वर्क है, इलेक्ट्रिकल वर्क है, रोड वर्क है, एक्सेट्रा. ओके, थैंक यू.